Telangana IT and Industries Minister Mr. KT Rama Rao on Saturday, 15th October 2022, laid the foundation stone for a manufacturing unit of the Malabar Gems and Jewellery in Maheshwaram of Rangareddy district, Telangana. The plant, which would cost Rs 750 crore to build, will be Malabar Gold and Diamonds' largest jewellery production unit, creating 2,750 jobs once it is operational. तेलंगाना के मिनिस्टर फॉर IT एंड इंडस्ट्रीज़ KTR ने मालाबार जेम्स एंड ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रंगारेड्डी में आज संग बुनियाद रखा है। इसके ज़रिए कम से कम 2,750 रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और 750 करोड़ का ये मंसूबा है जिसके तहत मालाबार गोल्ड काम कर रहा है। आइए देखते हैं इस मौके पर KTR का ये बयान। Indian culture, Indian traditions, we have a culture of gifting. We have a culture of, gifting, especially jewelry of all kinds, gold, silver, diamonds, etc., etc. So, to set the context, when I was, having a chat this morning with Mr. Ahammed, he told me that his turnover, in terms of his turnover, the largest numbers actually come from India. And in fact, one of his stores in Hyderabad is also doing really, really well, is what he told me. So I'm excited of the prospects because gems and jewelry is one of our thrust areas. In fact, in the industrial policy of Government of Telangana, gems and jewelry is one of our important areas, one of our thrust areas. And as he again and his group, pointed out, there's plenty of fine craftsmen, plenty of fine goldsmiths in Telangana with developed skill. So there is no real need to acquire new skill. There is no real need to, groom or, create any new talent here. There's enough people, from various districts in Telangana who can, offer you that kind of service. And what I was also told by the Honorable Chairman, आपने कहा था कि जो आपके यहाँ काम करते हैं, आपके यहाँ जो क्राफ्ट्समैन काम करते हैं, दिन में 8 घंटा काम करते हैं और करीब 15 से 20 हज़ार तक कमाते हैं, which is a fantastic thing. In fact, for a lot of these local craftsmen who are looking for employment, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी ग्रुप जो वादा आपने किया कि अभी 2,75,000 स्क्वायर फुट वाला फैक्ट्री और रिफाइनरी बनाएंगे 1 साल में, आप, क्योंकि आपका बर्थडे भी है नवंबर में, तो आप नेक्स्ट ईयर 30 इयर्स भी कंप्लीट करेंगी आपकी ग्रुप। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप की टीम आपका, स्पेशली आशर, आई थिंक इट्स अप टू यू नाउ टू मेक इट हैपन। सो अगले 1 साल में फिर फैक्ट्री का जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हाथ से वो इनॉग्रेशन भी करेंगे महेश्वरम में। बहुत आपको और आपके ग्रुप को बहुत बहुत बधाई, और क्योंकि आपने सही जगह चुना, हैदराबाद आपने चुना, बहुत बहुत बधाई आपको। वाइज चॉइस। This is a state that excels in creating a congenial environment for investors of all kinds, from technology to biology to aerospace, defense to gems, jewelry, textiles, logistics, food processing. हमारे यहाँ सारे सेक्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं, इन सभी को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत मान्यता देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको देख के, क्योंकि Malabar is a reputed name in this line of business. You are the 6th largest jewelry maker in the world. तो उम्मीद करते हैं कि आपको देख के, आपका इंस्पिरेशन लेके और भी ज्वेलरी मेकर्स और रिफाइनरीज यहाँ पे आएंगी, और हैदराबाद, जैसा आपने कहा स्लाइड में, एक फाइन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। So may I request you to stay back because we have a token of gratitude to present to you. Yes, may I call upon the chairman, Mr. Ahammed sir, on the stage, and can we have the vice chairman, Mr. Salam sir, on the stage? Can we have our MD, Mr. Asher O, on the stage, and the director, Mr. Nishad sir, on the stage? Can we have a Principal Secretary for Government of Telangana, Mr. Jayesh Ranjan sir, on the stage? Requesting Mr. Narsimha Reddy, the MD of TSIIC, to step on the stage, and may I request Mr. Krishna Bhaskar sir, the IAS Director of Industries, to join us on the stage.
May I request Mr. Shafiq, the head of supply chain, to join us on the stage. May I request Mr. Venkat sir from Jayesh sir's team to join us on the stage. And may I request Mr. Siraj, the head of retail operations India, to join us on the stage. Presenting a memento as a small token of gratitude from the Malabar Group to Honorable Minister Shri KT Rama Rao sir.